time for the last presenter of this session. He is Professor of Medicine, Baqai Medical University, Karachi. Professor Jamil Ahmad. Sir, please come on stage for your presentation. It's a pleasure to be here in Hyderabad. Thanks the organizer for giving me an opportunity to speak to you, the panelists, the chairperson, and the distinguished guest. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Now, what we are going to deal is the new horizon as far as diabetes mellitus is concerned. One or two things which I would like to emphasize is that what exactly is happening as far as diabetes mellitus is concerned all over the world. And this is what exactly in the IDF Atlas. You know that this Atlas is usually published after every 2 years. This is the last one, 2022, having the data of 2021. Now before I go on, I would like to tell you something and update you on the recently concluded Diabetes UK conference. And the most important thing which has been discussed and debated is that how can we make the management of diabetes mellitus chemical free. Chemical free means that without any drug. I'll keep on talking about this because this is the talk of the day. Although we have forgotten the message which has been revealed to us 1400 years ago, and now people are getting back to the basics. Now this is exactly we are at the moment. You can see that we comes in the MENA region, right? And you can see that if we include MENA and Southeast Asia region, that consists of India, Bangladesh and all that, the other countries, and you can see that the burden is increasing. There are two reasons for increasing burden. Number one, and the most important, is the imbibement of more than extra calories by adult and individuals. And number two is not burning the calories by exerting. There is no doubt that these are the two main reasons, not only for diabetes mellitus, obesity, truncal obesity, non-alcoholic fatty liver disease, metabolic syndrome, cardiovascular morbidity and mortality, osteoporosis, degenerative arthritis. You can name it and you can hit it. And if we keep on projecting the data, keep on registering the data and forget the basics, perhaps we will be meeting in another conference with another set of data. So it's a time to act. As our respectable two presenters already said, and the pediatrician has very clearly outlined. I know that the things are different. The apple was very common in UK. It's a common fruit. So they said an apple a day, keep the doctor away. If they happen to have more pineapple, perhaps they end up with one pineapple a day, keep the doctor away. Because that's a debate going on. But the simply is that you eat less if you have to keep the doctor away. There we go. That's we are here. One small reason for increasing the number of diabetes is very unfortunate, is the commercial and materialistic aspect of health management. And by this I mean that we are shading away from the reality. The reality is that to manage, to control, to prevent the disease, it's not to pick the disease and treat the disease.
I mean, you are not going to increase the likelihood of saving life when someone is bombing you. So this is exactly what's happening at the moment in the health circuit. And the thing is that new compound, new diseases, new strategy, when we are forgetting the basic, that has resulted in that. Here is the progression. This is self-explanatory. I don't have reason to explain it to you, but these are the data from the International Diabetes IDF, and that was presented in the latest concluded IDF meet. This is most alarming. At the moment what's happening, that a significant number of budget of a man who is poor by many standards is going on to the health. Unfortunately, around 70 to 75% health budget is the responsibility of the patient himself. The state is only taking between 20 to 25, and now that is hitting as far as the wallet of the poor man is concerned. And this is exactly what's happening all over the world. Now they are trying to say that which treatment, which management plan is going to cut down the expenditure of the health, in addition to providing the healthy life or a disease-free life to the world. Now, as far as the progression of the diabetes mellitus is concerned, one thing in addition to that, what you have seen here is how the diabetes mellitus is usually developed. One smaller point which I must emphasize here is bringing down the criteria of diagnosing diabetes mellitus, impaired glucose tolerance and all that. And that is also very debatable, I must say. Okay, all these criteria which are established in the West, they are not usually, we cannot apply those criteria to our population. Or you cannot generalize everything, right? That one school of thought which is at the one small areas of the world or are telling us that this is the border of a disease, these are the severity of the disease, and these are the prevention and preventable aspect. Unfortunately, we don't have a culture of finding out ourselves in our own area. And in this regard, I must emphasize all the clinicians sitting here, all the contributors of this conference, including the pharma industry, which has started giving the initiative for the institutes and all other organizations to run their own research so that we can see exactly what we are. So where we can hold the disease. A patient of mine asked me that how should I reduce the weight. So I said to him, when you go to a wedding dinner, right, and when they open the dinner with a bang, if you can wait for 10 minutes, you will be able to reduce your weight and manage your diabetes. But that is the point कि जब ना बेटा बाप को पहचानता है, ना बहन बहन को पहचानती है, ठीक है, ना मेजबान को कोई देखता है, ठीक है, सही, जिस मेज से उठ के जाता है दूसरी मेज पे आके बैठता है। तो मैंने कहा कि अगर आप 15 मिनट इंतजार कर लेंगे तो आपका वजन कम हो जाएगा, इसलिए कि 15 मिनट के बाद आपको सिर्फ सालन और मुर्गी की गर्दन मिलेगी, जो कि बहुत ही सेहत के लिए मुफीद है, और आपको मिलेगी सलाद, ठीक, वो कि वो 2-3 दिन पुरानी होगी, ठीक है, लेकिन वो आखिरी वक्त तक रखी रहेगी। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि this is exactly what happening all over the world. So आप ये ना समझें कि पाकिस्तान में ये होता है, शायद हम लोगों को बताया नहीं जाता बाकी दुनिया में क्या होता है।
trainer of the trainer program about diabetes. Everything we are talking about. And what's happening? After the talk, we had a tea break. 11 varieties of dessert was there. ताकि अगला सेशन हो हाउ टू प्रिवेंट डायबिटीज. अब ये सबको पता है, ठीक है, ये तो सिर्फ एक रिमाइंडर है. यहां पे मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा जहां तक मैनेजमेंट की बात है. और इस मैनेजमेंट से पहले, इट्स अ वेरी बिजी स्लाइड, दिस इज द लेटेस्ट वन, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट. एक बात मैं और बता दूं अबाउट एडीए, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन. अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने जो 15 साल पहले जो प्लान दिया था, उसमें सबसे छोटे हरूफ में जो लिखा हुआ था, with the smallest possible font on computer, उसमें लिखा हुआ था लाइफ स्टाइल एंड डाइट. फिर जब उनको बताया गया कि भाई ये क्या कर रहे हो, सबसे पहले बड़े बड़े में साइज 14 में दवा शुरू थी. फिर अब उनको बताया गया कि भाई बॉक्स के अंदर सबसे पहले लाइफ स्टाइल और डाइट लेकर आइए. So around 14 years ago they have changed it to bring it into the bracket. और अभी जो डायबिटीज यूके में जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ. that 2 weeks ago they have managed diabetes mellitus with HbA1c of 9+ with only exertion between 8,000 to 10,000 steps daily and a calorie intake of between 1200 to 1400 per day. And a space of 1.5 years, their 56% population is chemical free, no medication. But these are the people who manage to stick to that diet and its alternative. And now they are having once a week a leisure food as well. और वो वही बात थी जो हमें बताई गई थी 1400 साल पहले कि मैदे को सिर्फ 1/3 भरना है, हफ्ते में 2 दिन खाना नहीं खाना है. और एक बात सुन लीजिए, द स्कैंडिनेवियन ग्रुप व्हिच प्रेजेंटेड देयर, उनसे कहा गया कि साहब हमारे तो मजहब में ही है, हम तो रोजा रखते हैं. तो उन्होंने फिर एक ही बात की, कहने जी हाँ आप लोग रोजा रखते हैं, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन हमने जब एनालाइज किया तो हमें ये पता चला कि आपकी अफ्तार और सहरी मिला के आम दिनों से 1.5 गुना ज्यादा कैलोरी है. लिहाजा we haven't taken into consideration that, as simple as that. ठीक, बताया तो ये गया था कि साहब नमाज पढ़ लेंगे, चले एक खजूर खा लेकर नमाज पढ़ के खाएं, ठीक है, लेकिन वो बहरहाल क्या करें, वो दिल मानते ही नहीं. तो अब इसके अंदर इसको मैं दोबारा एक जगह कर दूंगा कि देखें प्रोफेसर फिरोज यहाँ बैठे हुए हैं कि नए नए सॉल्ट आ रहे हैं और वो सॉल्ट की बेसिस ये है कि आपका वजन कम हो रहा है या नहीं, या वजन न्यूट्रल है या नहीं. अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा है तो दवा काम नहीं करेगी. और क्या वो दवा दूसरी चीजों को भी हेल्प करती है जो कि डायबिटीज के फोकल एरियाज मैंने आपको बताए थे. तो अब वो सारी दवाएं आई हैं और इसमें अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव चीज नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि SGLT2 को भी इनिशिएट कर सकते हैं आप. नो डाउट कि मेटफॉर्मिन इज द स्टिल बेस्ट, ऑल्दो कि बहुत सी लॉबी उसके अगेंस्ट हैं. विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर कॉलीग जो नेफ्रोलॉजिस्ट यहाँ बैठे हुए थे, एक जमाने में उन्होंने कह दिया था सबने मिल मिला के किसी का भी क्रिएटिनिन 1.4 से ज्यादा हो तो वो तो गया अगली गोली में, ठीक है ना. फिर उसके बाद ये कहा गया कि साहब लैक्टिक एसिडोसिस इज ए वेरी डेंजरस थिंग, ऐसी खतरनाक चीज है कि वो 1 मिनट में मर गए. वो 1 मिनट का मरता हुआ पेशेंट मैंने 29 साल नहीं 30 साल में तो नहीं देखा. 85 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन केसेस ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस एंड स्टिल द बेस्ट कंपाउंड. और ये तमाम बातें होती है कि एड ऑन थेरेपी.
तो उसके बाद SGLT2 की बात आती है कि वेट न्यूट्रल है, वेट रिड्यूसिंग है, क्योंकि इसका मोड ऑफ एक्शन ऐसा है कि ये सेलुलर लेवल पे एक्ट करती है। तो ना सिर्फ ये कि मायोकार्डियम की एफिशिएंसी को बेहतर करती है, किडनी को, पेरिफेरीज को। याद रखिएगा, दो बातें आपने सुनी होगी कि साहब ग्लूकोसेंट्रिक अप्रोच, ठीक कि साहब ये तो ग्लूकोसेंट्रिक अप्रोच की बात कर रहे हैं। बात दरअसल ये है कि आखिर ये सारी कॉम्प्लिकेशन होती क्यों है? कॉम्प्लिकेशन इसलिए होती है कि ग्लूकोज इज फ्लोटिंग इन द ब्लड वेसल एंड द ब्लड वेसल आर गेटिंग इंजर्ड बाय दोस ग्लूकोज मॉलिक्यूल। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, एंड दैट गोइंग टू डू एथेरोस्क्लेरोटिक एक्टिविटी, और उसी एथेरोस्क्लेरोसिस से इस्कीमिया होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, कार्डियक इवेंट हो रहे होते हैं, सीवी हो सकता है, और सब हो सकता है। तो ये बात याद रखिएगा। और याद रखिएगा, किसी भी मरीज से आप कहेंगे कि मैंने आपका दिल बड़ा मजबूत कर दिया, तो वो कहेगा मेरी शुगर 350, उसको तो नीचे करें पहले, क्योंकि आप कुछ भी कर लें, जितना भी मजबूत दिल कर दें, अगर हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा तो यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव, एज सिंपल एज दैट। सर्वाइवल पे भी मैं एक बात कर दूं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, ये मेरे ज़ाती ख्यालात हैं, हो सकता है कि आप उससे डिसएग्री करें। हमने वेस्ट की सारी रिसर्च देते हैं कि हमने लाइफ प्रोलॉन्ग कर दी ये दवा देने से। मेरा ईमान है कि मैं लाइफ प्रोलॉन्ग नहीं कर सकता, ठीक है ना। लाइफ जो है, मौत का वक्त मुकर्रर है और सब ने मरना है, ठीक। हाँ, मुझे हुक्म ये दिया गया है कि जो जिंदगी अल्लाह ने दी है उसको सेहतमंद रखा जाए, ठीक। तो SGLT2 पे मैं इसी पे आगे बात करना चाह रहा था कि SGLT2 और DPP4 को आपको पता है, GLP-1 जो सारे इंटेस्टिनल हार्मोन्स है उससे वो प्रोड्यूस होती है और वो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म बेहतर करती है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, इसने बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया है इसको। एक ट्रायल आपके सामने एर्टुग्लिफ्लोजिन, क्योंकि आजकल जैसे टॉप ऑफ द डे डापाग्लिफ्लोजिन थी, और उसके बाद एम्पाग्लिफ्लोजिन थी, फिर अब एर्टुग्लिफ्लोजिन आई है, कैनाग्लिफ्लोजिन भी आई थी, लेकिन क्योंकि एम्पुटेशन का रेट हाई था इसलिए वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रही। तो ये एक वर्टिस ट्रायल है, ये मोड ऑफ एक्शन है, आई डोंट हैव टू रिपीट इट कि किस तरह से SGLT2 एक्ट करते हैं। इसको मैं आई विल रश। ये ट्रायल इतनी जगह पे किया गया था, मल्टी सेंटर ट्रायल की ज्यादा वैल्यू है, और ये सेलेक्टिविटी सॉल्ट की बहुत हाई है। और आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि इस बार को आप देख लीजिएगा, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड यू पीपल शुड बी आई थिंक एलिजिबल टू रीड दिस बार नाउ। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कहां पे देखिए बेनिफिट ज्यादा आ रहा है। कीप ऑन ट्रेसिंग इट, यू कैन सी that the SGLT2 Ertugliflozin is comparable with empagliflozin, even better if added with metformin. रीनल फंक्शन की बात हुई, we all know that कि SGLT2 जब इंट्रोड्यूस हुए तो ये पता चला था कि शायद ये रीनल फंक्शन को डिक्रीज करती है, but with the passage time ये पता चला कि शुरू में डिक्रीज होती है, फिर वो बेहतर हो जाता है, और SGLT2 और इम्प्रोवाइज कर देती है। So this was the overall conclusion and the passage as far as the vertex trial is concerned, कि Ertugliflozin के ऊपर था। Self-explanatory, I don't have to explain all these things. कि साहब मेश, हार्ट फेलियर, कार्डियोवैस्कुलर डेथ, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर डेथ के बारे में बता दूं, if you reduce the waist by half an inch, you can reduce the cardiovascular mortality by 50%. Forget about the chemicals. As simple as that. ये वर्टेक्स का कंक्लूजन आपके सामने है। Emparec, Canvas, Declare, Timmy, Vertex, these are the researchers which has been done on SGLT2, and they are all self-explanatory, and the new compound is getting the benefit out of all these things, and we have got a good alternative. Okay, if you want to put well, and it's a cost effective as well, that when you got a drug which is just 50 rupees a day, that is much better. Sir, we got 1 minute more. This is the message which I wanted to give. The last thing which I would say, remember, diet and exercise, and those compounds which are weight neutral or weight reducing. I thank you very much.
for your very patient listening.